नारायणीयम् अध्याय 11 सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् उपजातिः। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश विशाखपये नमः। मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैरनेक वापि मणिमन्दिरैश्च अनूपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः अमेयात्मने नमः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विवीक्षून् ध्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् सर्वयोगविनिसृताय नमः। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रितौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् वसवे नमः। तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुरानन्द यं स्थानभिराममूर्त्या वसुमनसे नमः। प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्राननन्य नाथवथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्मामुपेत मिथ्यात्तकृपं न्यगादीः सत्याय नमः। त्वदीयभृत्यावथ कश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ समात्मने नमः। हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषा न्यरुन्धां निजवासनान्धौ असंमिताय नमः। तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रोर्रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् समाय नमः। ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वां भक्तैकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश अमोघाय नमः। इति 11 दशकं समाप्तं। नारायण 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 नारायण।